वो अब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर गया और उधर वाराणसी में ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष लामबंद होने लगा। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ मामले में मुस्लिम समाज ने बनारस बंद का ऐलान किया है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यह बंद का ऐलान किया और इस दौरान मुस्लिम इलाके जितने भी हैं वहां दुकानें बंद रखने के आदेश हैं, यानी वो बंद रखें दुकानें, ये कहा गया है। इतना ही नहीं, लोगों से शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज पढ़ने की अपील की गई है, क्योंकि आज शुक्रवार है, इसलिए सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो, ये बात की अपील की गई है, यानी शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए। वहीं साधु संतों का कहना है कि 1993 से पहले व्यास जी तहखाने में पूजा हुआ करती थी। एएसआई की रिपोर्ट में भी परिसर में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। मूर्ति रखी नहीं गई है, यह मूर्ति सैकड़ों वर्षों से वहीं पे पड़ी हुई थी उपेक्षित अवस्था में। हम बाहर से कुछ भी नहीं ले जा सकते और न कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है कि इन्होंने, उसमें 8 दुकानें थी, इन्होंने हिंदुओं को दुकान दी थी। ये तो बड़े शरीफ ठहरे बेचारे कि हिंदुओं को दुकानदार भी बनाया। न देश के किसी वक्फ के इलाके में हिंदू दुकानदार इनके वक्त के संपत्तियों में नहीं होते, फिर भी ये कितनी बेशर्मी से कह रहे कि हिंदू दुकानदार थे, वो मूर्ति बनाते थे, टूटी मूर्ति डाल दिए। दर्शन करने के बाद एक अद्भुत अनुभूति प्राप्त हो रही है और इतने दिनों से यह स्थान बंद था, जिसके जो है दुखद परिणाम दिखाई दे रहे थे, आज सुखद परिणाम दिखाई दे रहे हैं भगवान के दर्शन करने के बाद। और इनका नामकरण किया गया काशी विद्वत परिषद के द्वारा ज्ञानवापी तालगृह। इस तालगृह में विराजमान जो विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, हनुमान जी हैं, इसलिए आज से वहाँ अखंड रामायण का पाठ भी बैठा दिया गया है। भोग आरती शुरू हो गई है और सभी हिंदू भाइयों के लिए दर्शन, झांकी दर्शन प्रारंभ हो गई है। और इस बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने भारत को 330 करोड़ की लागत के MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की बिक्री पर मोहर लगा दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को यह खतरनाक अटैक ड्रोन बेचने की अंतिम मंजूरी दे दी है और अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की तरफ से जारी किया गया बयान में बताया गया है कि इसकी इंफॉर्मेशन अमेरिकी कांग्रेस को दे दी गई है। तो 330 करोड़ रुपए में एक 30 समुद्री अटैक ड्रोन की डील को अमेरिका ने फाइनल कर दिया है। MQ-9B स्काई गार्डियन के साथ मिसाइल की भी डील हो गई है। ड्रोन पर तैनात होने वाले बमों का सौदा भी इसमें शामिल है। तो भारत के साथ 31 MQ-9B ड्रोन डील को अमेरिका ने एक तरह से हरी झंडी दिखा दी है। तो एक बहुत बड़ी खबर है और इसकी जो बाकायदा महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाना मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका। पूजा पर तत्काल रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इंकार। फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सड़क पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी का भी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल। दिल्ली में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार, हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। चंपाई सोरेन ने ली झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस और आरजेडी के एक मंत्रियों ने भी ली शपथ। रांची से हैदराबाद निकल रहे हैं सरकार में शामिल 39 विधायक। उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी करीब 800 पन्नों की रिपोर्ट। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा ड्राफ्ट। बहुविवाह और हलाला पर रोक लगाने का सुझाव। आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, ज्ञानवापी में अखंड ज्योति जल चुकी है और ऐसे में मुस्लिम पक्ष अभी भी विरोध कर रहा है। हाईकोर्ट आज गया, लेकिन हाईकोर्ट से भी करारा झटका मिला है आज मुस्लिम पक्ष को और कहा गया
कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तब आपने रोक क्यों नहीं लगाई? तो ज्ञानवापी मामले में सीजीआई को चिट्ठी लिखेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का भी वक्त मांगा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष नाराज है और फैसले पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति से भी वक्त मांगा है। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला बुधवार को आता है, जिसमें तहखाने में पूजा की इजाजत मिलती है। उसके बाद कल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट जाने के बाद आज मुस्लिम पक्ष को आज भी झटका मिला है। ऐसे में अब सीजीआई को चिट्ठी लिखेगा मुस्लिम पक्ष। तो मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, सुनवाई हुई, लेकिन झटका लगा और 6 तारीख की अगली तारीख जो है मुकर्रर कर दी गई है, वहां पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के निर्देश भी दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हमारे साथ में, उनका रुख करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां हाईकोर्ट से उम्मीद थी मुस्लिम पक्ष को, लेकिन हाईकोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया और सरकार को कहा कि उस जगह को संरक्षित कर लीजिए। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें यूं तो कल की हैं, 1 हफ्ते का समय दिया गया, लेकिन उससे पहले रात में ही सफाई कर दी गई। सुबह ही पुजारी पहुंचते हैं। ये वो पुजारी हैं जिनके पूर्वजों ने लंबी लड़ाई लड़ी, उनका ही ये तहखाना हुआ करता था। यहाँ सोमनाथ व्यास का ये तहखाना, जब पूजा पाठ किया करते थे वो। और अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित देखिए, तमाम वाद विवाद यहाँ पर हो रहा है। हाईकोर्ट से उम्मीदें लगातार लगाई जा रही थी मुस्लिम पक्ष को, लेकिन ये बड़ा झटका है। आगे अब जो कानूनी प्रक्रिया है किस तरीके से अब होने वाली, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष सीजीआई को भी चिट्ठी लिखेगा, क्या जानकारी? देखिए, मुस्लिम पक्ष भले ही सीजीआई को चिट्ठी लिखे, लेकिन जो कोर्ट है वो सीआरपीसी की धाराओं के तहत चलती है और कोर्ट के नियम के मुताबिक ही जिस तरीके से आज मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी याचिका दायर की थी, उस याचिका में ही त्रुटि थी, उस याचिका में ही भूल थी और हाईकोर्ट ने उस भूल को जो मिस्टेक था उसको पॉइंट आउट किया कि वो 31 जनवरी के जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो 17 जनवरी के जिला कोर्ट के आदेश को वो चुनौती ना दे दे। 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने यह आदेश दिया था, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को रिसीवर बना दिए थे, यानी जो तहखाने वाले जगह है उसको देखरेख करने के लिए उसको डीएम को रिसीवर बना दिया गया था कि वहां किसी भी तरीके से छेड़छाड़ ना हो। उस आदेश को मुस्लिम पक्षकार ने नहीं चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, अलबत्ता वो 31 जनवरी के आदेश को चैलेंज करने के लिए पहुंच गए थे। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंच गए थे, लेकिन हायरार्की जो है नियम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। आज भी याचिका में उनकी त्रुटि थी, मिस्टेक था। उस याचिका में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए मुस्लिम पक्षकार ने कोर्ट में कहा है। जाहिर तौर पे 6 फरवरी को जो अमेंडमेंट होगा उस अमेंडमेंट पर बैठक अब वो सबसे पहले वो अपनी दलील पेश करेंगे, उसके बाद हिंदू पक्षकार उस दलील को किस तरीके से काउंटर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में निर्देश दिया है कि जो तहखाने वाली जगह है वहां पर किसी भी तरीके का निर्माण कार्य ना हो और किसी भी तरीके से कोई क्षति ना पहुंचाए, इसका ध्यान डीएम रखें। ये अपने आदेश में, आज के आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर ही मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले, अब से कुछ घंटे पहले यहाँ पर नमाज अदा करने के बाद यहाँ से जो मुस्लिम पक्षकार हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ से निकले हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया था, आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है। तस्वीरें मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा। यहाँ पर बैरिकेटिंग थी, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैरिकेटिंग थी, लेकिन अभी बैरिकेटिंग यहाँ से हटा दी गई है। पुलिस जो है अभी यहाँ से नॉर्मल हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल था, मीडिया को भी यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक चीज जो आपने भी नोटिस की होगी, मुस्लिम पक्ष दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है, लेकिन आज बड़ी शांति से जुम्मे की नमाज अदा कर दी गई उसी ज्ञानवापी परिसर में, जहां पर नमाज भी अदा हुई और सुबह सुबह भोग आरती भी हुई, सुबह सुबह श्रृंगार आरती भी हुई। यानी कि ग्राउंड पर उस तरीके की तकरार नहीं है जो मुस्लिम पक्ष दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड पर किसी भी तरीके का तकरार नहीं है। एक ही प्रमाइसिस, एक ही बिल्डिंग, ऊपर जो है 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही है, जबकि नीचे जो है 5 वक्त की आरती हो रही है, पूजन अर्चन हो रहा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ज्ञानव्यापी परिसर के ठीक बाहर हैं हम यहाँ पर हैं, और सभी समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और कहीं से भी कोई तकरार यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। ये जो इलाका है, यहाँ दाल मंडी का इलाका है। कल अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी है, उन्होंने बंद का आह्वान किया था। मुस्लिम इलाकों में, अल्पसंख्यक इलाकों में बंद का आह्वान किया था, तो जाहिर तौर पे यहाँ पर मार्केट बंद की गई थी, लेकिन किसी भी तरीके का विरोध नहीं है। कुछ अल्पसंख्यक लोगों से मेरी बातचीत हुई जो नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कानून के तहत होगा, जो कोर्ट का आदेश होगा, उसका वो पालन करेंगे। जी बिल्कुल अमित, और इसी तरह की तस्वीर हमने पहले भी देखी थी जब ज्ञानवापी में सर्वे का फैसला आया था। आपसी सौहार्द वहां पर बना रहता है। हालांकि ये कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का दरवाजा मुस्लिम पक्ष यहां पर खटखटा रहा है और अब तो सीजीआई से मिलने का वक्त भी मांगा है। दरअसल ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने को लोगों के लिए खोल दिया गया है। तहखाने में विराजमान शिव जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यासजी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस केस की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, तो अभी तो पूजा पर रोक नहीं है, यानी कि जो 5 समय की आरती हो रही है वो चलती रहेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल हमने देखा था कि ब्रह्ममुहूर्त में पूजा की शुरुआत हुई, 30 साल बाद पहली बार पूजा हुई, और जो सनातन परंपरा है उसी के हिसाब से ब्रह्ममुहूर्त में पूजा की शुरुआत होती है, 5 समय की आरती, और उसके बाद आम लोगों के लिए भी अब इसे खोल दिया गया है। और हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है और व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए आज नए पुजारी की नियुक्ति हो सकती है। हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने नए पुजारी की नियुक्ति का दावा किया है। फिलहाल विश्वनाथ मंदिर के पुजारी व्यास जी तहखाने में पूजा इस वक्त कर रहे हैं, और ऐसे में अब जो नए पुजारी हैं उनकी भी नियुक्ति यहां पर की जा सकती है, और आज ही ये नई नियुक्ति पुजारी की यहां पर हो सकती है। हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने नए पुजारी की नियुक्ति का दावा यहां कर दिया है। फिलहाल जो पुजारी वहां अंदर मौजूद है, जो पूजन अर्चन कर रहे हैं, वो विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं जो व्यास जी तहखाने में पूजन अर्चन कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब नई नियुक्ति भी यहां पर हो सकती है। एक नए नियुक्त पुजारी यहां पर पूजन अर्चन अब करेंगे, और आज ही हो सकता है कि उनकी नई नियुक्ति यहां पर हो। व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जो थी 31 साल तक बंद रही, लेकिन 30 साल बाद वो मौका एक बार फिर से आया और फिर से ये पूजन अर्चन यहां पर शुरू किया गया है। आरती होती है, 5 बार की आरती पूर्ण रूप से हो रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि जो पुजारी हैं उनकी भी नियुक्ति यहां हो सकती है। तो नए पुजारी की नियुक्ति होनी है, और कैसे नियुक्ति होती है वो देखेंगे, लेकिन हमारे साथ अमित लगातार बने हुए। अमित, मैं आपके पीछे की तस्वीरें देख पा रही हूँ, डिप्लॉयमेंट है अभी भी पुलिस का, और जरूरत भी है इस वक्त अगर उस तस्वीर को बनाए रखना है आपको, पीसफुल तस्वीर जिसके लिए गंगा जमनी तहजीब के लिए बनारस जाना जाता है। देखिए सपना, डिप्लॉयमेंट तो जरूर है यहाँ पर, लेकिन अब डिप्लॉयमेंट सुबह तक काफ़ी ज़्यादा थी, अब सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। अब जो ये पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब ये वापस अपने गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। सीधे यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन पूजन करके, इनसे हम बातचीत करते हैं। महाराज जी, अंदर दर्शन पूजन हुआ? हाँ, अंदर दर्शन पूजा बढ़िया से हो रहा है। व्यास जी के तहखाने में भी दर्शन जी, बढ़िया भव्य दर्शन हुआ, दिव्य दर्शन हुआ। दिव्य दर्शन हुआ जी, दिव्य दर्शन। कितने सालों बाद दर्शन किए? अरे बहुत साल के बाद। बहुत खुश हैं आप? जी जी, सब लोग खुश हैं, अच्छी बात है, दर्शन होना चाहिए। तो देखिए, जितने भी श्रद्धालु अंदर से दर्शन करके आ रहे हैं वो बेहद खुश हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, देखिए सपना, अब हर नमाज अदा होने के बाद जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो यहाँ खड़ी हैं, और वो अब यहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हुआ, कहीं से कोई टकराव की स्थिति नहीं थी। एक ही प्रमाइस, पहली बार ऐसी हम आपको रोकेंगे क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर सबकी नजर बनी हुई है। कुछ ही पलों में आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का खास इंटरव्यू देखेंगे हमारे न्यूज 18 इंडिया के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ, जिसमें आप बजट का हर आंकड़ा बारीकी से समझ पाएंगे। कुछ देर का इंतजार और 4 बजे आप हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देखेंगे। तो देखिए, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की शुरुआत कुछ देर में होगी, लेकिन खबरों में यहां आगे बढ़ते हैं, जहां हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा की जानकारी दी और साथ ही नए पुजारी की नियुक्ति का दावा भी किया। आज प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई, तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है।
और ख़ास तौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदू जन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को जो है। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। आज पूजा का दूसरा दिन, तो कैसा आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितनी खुशी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए वहाँ पे? हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। तो देखिए खुशी की लहर है हिंदू पक्ष में। अमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद वाराणसी में ही वो मौजूद है। अमित देखिए कई दलीलें दी गई, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दे रहा था कोर्ट में, मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें दी गई, लेकिन हिंदू पक्ष ने ये कहा कि तहखाने का जो दरवाजा है आखिर वो कहाँ गया, इसको लेकर क्या जवाब वहां पर उस वक्त मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया गया था कोर्ट के अंदर? देखिए यहीं पर जिस तरीके से हिंदू पक्ष जो है लगातार घेराबंदी कर रहा था मुस्लिम पक्ष का, वो भी कोर्ट में सीआरपीसी की धाराओं के तहत, नियम के तहत जिस तरीके से कैविएट दायर कर दी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो कानून के अंतर्गत जिस तरीके से वो घेराबंदी कर रहे थे, वो घेराबंदी में कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार फंस गए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिला अदालत का फैसला आया, जिला अदालत के फैसले के बाद रात में जिला अदालत के फैसले के महज 7 घंटे के अंदर पूजन अर्चन शुरू हो गई थी। शयन आरती जो है रात में ही हो गई थी 12 बजे। जिस तरीके से आज मुस्लिम पक्षकार के द्वारा कोर्ट में कहा गया कि 31 तारीख को फैसला आया और 31 तारीख की रात में ही जो जिला प्रशासन है वो 2000 पुलिस कर्मियों के साथ वहां पर पहुंचे, बैरिकेडिंग हटाई और उसके बाद वहां पर पूजन अर्चन शुरू हो गई। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से हिंदू पक्षकार ने घेराबंदी की है कोर्ट के अंदर नियमों को आधार बनाते हुए, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्षकार विफल हुए, क्योंकि जिस तरीके से 31 तारीख के आदेश, 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ सीधे मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्हें सीधे हाईकोर्ट में जाकर अर्जेंट पिटीशन लगाना था, रात में ही लगाना था, तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट सुनता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुना नहीं, उन्हें वापस हाईकोर्ट भेज दिया। तो जाहिर तौर पर हाईकोर्ट का पिटीशन तैयार करने में समय लगता है, तैयार हुआ। जब पिटीशन आज लेकर वो पहुंचे हाईकोर्ट के सामने, तो हाईकोर्ट ने उस पिटीशन पे ही सवाल उठा दिया कि 31 जनवरी के फैसले को आप चैलेंज कर रहे हैं, पहले तो आपको 17 जनवरी को फैसले को चैलेंज करना पड़ेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यानी डीएम को रिसीवर बना दिया गया था। तो उस फैसले को चैलेंज करेंगे, उसके बाद 31 तारीख को फैसले को चैलेंज कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि हम अपनी याचिका में सुधार करते हैं, और हिंदू पक्षकार पहले से ही तैयार था ये सारे पॉइंट्स लेकर, और जिस तरीके से तहखाने का दरवाजा हो और तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरीके से लगातार वो उठा रहे थे। 1993 तक जिस तरीके से पूजन अर्चन हुई थी, उस पूजन अर्चन की तस्वीरें को जिस तरीके से सबूत के तौर पर कोर्ट में उन्होंने पेश किया। इसके अलावा किस आधार पर पूजन अर्चन को अचानक बंद किया गया, ये भी हिंदू पक्षकार के द्वारा सवाल उठाया गया, लेकिन कोई रिटन ऑर्डर नहीं था पूजन अर्चन बंद करने के लिए। उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार ने आदेश दिया था, और उसके बाद उस वक्त की प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दी। तो ये तमाम बातें थी। तो जो एविडेंस है हिंदू पक्षकार के पास वो काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं अपने एविडेंस के आधार पर, अपने सबूतों के आधार पर वो लगातार कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्षकार की घेराबंदी कर रहे हैं। जी, तो घेराबंदी करने का प्रयास यहाँ पर जरूर किया गया, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा झटका भी यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को लगता हुआ। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजा अर्चना हो रही है, और ज्ञानवापी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है देखने के लिए। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने का ताला खोला गया, रात में ही साफ सफाई की गई और रात में ही पूजा हुई। 30 साल बाद वहां पहली बार पूजा हुई, और अब हर दिन 5 बार आरती हो रही है। 30 सालों तक इन श्रद्धालुओं ने इंतजार किया। आप देख रहे हैं कि वो जो द्वार है वो विश्वनाथ की तरफ जाता है, वहां एक बैरिकेड लगता है, उस बैरिकेड को काटा गया, क्योंकि अगर आप पहले कभी गए हो विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए तो वहां पुलिस की तैनाती हुआ करती थी, आप वहां नहीं जा सकते थे। 30 सालों बाद यहां जाने का श्रद्धालुओं को सौभाग्य मिला, लिहाजा श्रद्धालु देखना चाहते हैं उस जगह पर। सामने से दर्शन हो रहा है, बाहर से ही, लेकिन एकदम बहुत उत्साहित हो गया मैं। बाहर से ही व्यास जी के तहखाने में दर्शन हो लगातार हो रही है, झांकी हो रही है बाहर से, और साधारण श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है बाहर से। मन एकदम उत्साहित हो गया, एकदम रोंगटे समझ लिए खड़े हो गए हमारे दर्शन करके, क्योंकि 1993 में आखिरी बार पूजन हुई थी और फिर अब शुरू हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज लगा कि हिंदुस्तान जाग रहा है।
आप लोग क्या कहेंगे व्यास जी का तहखाने में दर्शन पूजन करना? बढ़िया है, मन खुशी हो गया। काफ़ी अच्छा लगा देख के। सुबह आए थे हम लोग 6 बजे आ गए थे, तो काफ़ी भीड़ कम था तो जल्दी से दर्शन भी हो गया और अच्छा लगा देख के। अभी आए हम लोग, कॉलेज से आ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट हम लोग ना, तो आए सुबह दर्शन हो गया। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, श्रद्धालु खुश हैं क्योंकि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, एक बार फिर से विस्तार से बताइए, जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष खफा है, चीफ जस्टिस से वक्त मांगा है, चिट्ठी यहां पर लिखी जाएगी, और क्या क्या त्रुटि थी? क्या सिर्फ याचिका में त्रुटि थी या कोर्ट की तरफ से कोई विशेष टिप्पणी भी की गई? देखिए, याचिका में त्रुटि तो थी, लेकिन उससे पहले जसप्रीत एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से जो अभी तक हम लगातार सुबह से अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे ज्ञानवापी परिसर के बाहर से कि किस तरीके से हेवी डिप्लॉयमेंट था, डिप्लॉयमेंट हट चुका है और आम लोग जो है, आप देखिए किस तरीके से आम लोग जो है यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर के बाहर की, किस तरीके से गंगा यमुना तहजीब का पालन हर कोई कर रहा है, कहीं से कोई टकराव नहीं है। दूसरी बात, अब आते हैं आज के कोर्ट के हियरिंग में। कोर्ट के हियरिंग जैसे ही पुटअप हुआ, जाहिर तौर पे याचिका कल ही दायर कर दिया गया था मुस्लिम पक्षकार यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से, और जैसे ही आज कोर्ट के सामने आया, कोर्ट ने जब मुस्लिम पक्षकार अपनी बातों को रख रहे थे, 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की बात कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की बात हो रही थी, तो उसी दौरान कोर्ट ने टोका मुस्लिम पक्षकार को और मुस्लिम पक्षकार के वकील नकवी से सीधे सीधे सवाल किया कि आप 31 जनवरी के आदेश को कैसे चुनौती दे रहे हैं, क्यों चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि जो 17 जनवरी का आदेश है उससे पहले आपको चुनौती देना है, क्योंकि 17 जनवरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश का ही एक अंश है 31 जनवरी। दरअसल हिंदू पक्षकार के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया गया था जिसमें उन्होंने तहखाने के अंदर पूजन अर्चन करने की बात कही थी और उसमें उन्होंने दलीलें पेश की थी कि 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार तहखाने के अंदर पूजन अर्चन करता था और अचानक एक दिन 1993 में ही उस वक्त के सरकार के आदेश के बाद, मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश के बाद उस पूजन अर्चन को बंद कर दिया गया और ये दलीलें उन्होंने पेश की थी। उसी दलील के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था और रिसीवर नियुक्त करने के बाद उस पूरे इलाके की जिम्मेदारी दे दी गई, यानी तहखाना और उसके आसपास का जो जगह है उसकी जिम्मेदारी डीएम को दे दी गई थी कि वहां पर यथास्थिति मेंटेन करें और मेंटेन करने के साथ साथ कोई भी नया निर्माण कार्य या किसी भी तरीके से उस जगह को क्षति ना पहुंचाया जाए। ये 17 जनवरी का आदेश था। अब जब 17 जनवरी का आदेश ये आ गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद फिर दोबारा से हिंदू पक्षकार कोर्ट पहुंचते हैं और वो जाके कोर्ट में दलील पेश करते हैं कि हाँ आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम वापस जरूर लौटेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक बड़ा झटका खुद मुस्लिम पक्ष को लगता हुआ, हालांकि बहुत सारी उम्मीदें उनको थी। पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है कि पहले आपको वाराणसी कोर्ट जाना चाहिए। जब वो वहां पहुंचते हैं उसके बाद अब उनको बड़ा झटका लगता है क्योंकि पूजा पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत अब की गई है और आम लोगों के लिए झरोखा खोल दिया गया है ताकि उसके जरिए वो वहां दर्शन कर पाएं और बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। ये उसकी एक झलकी आप भी न्यूज 18 इंडिया के जरिए देखिए। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, हर कोई देखना चाहता है क्योंकि 30 साल तक ये तहखाना इसी तरीके से बंद रहा। लेकिन आज जब वहां ज्योत जली, पहली ज्योत जली, उसके बाद अब 5 बार की जो आरती हो रही है, हर कोई ललाहित है। तमाम जो भक्त हैं, हिंदू पक्ष खासतौर पर हिंदू पक्ष के जितने भी भक्तगण हैं, वो देखना चाहते हैं कि आखिर वो मंदिर कौन सा है। इस वक्त अमित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तो फिलहाल क्या व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई हैं? एक झांकी छोटी सी खोली गई है, कहा जा रहा है कि अब जो भक्तगण आ रहे हैं वहां पर भारी भीड़ भी उसको लेकर लग रही है, लेकिन प्रशासन की और क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं पूरी तस्वीरें कि जहां पर तहखाना है, तहखाने के सामने का बैरिकेटिंग हटाया गया और ज्ञानवापी परिसर यानी ज्ञानवापी परिसर के जो दूसरे तरफ जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उस तरफ से एक जो बैरिकेटिंग है उसे हटा दिया गया है। यानी जो श्रद्धालु ज्ञानवापी के सामने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उस मंदिर में नंदी के पास जो दर्शन पूजन करने जा रहे हैं वो जाहिर तौर पर उस बैरिकेटिंग को हटा देने की वजह से वहाँ से सीधे दर्शन वो कर पा रहे हैं तहखाने के अंदर।
और किसी श्रद्धालु को उधर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया नहीं है और केवल वहाँ से बैरिकेटिंग हटा दी गई है। तो श्रद्धालु जो है वो सीधे तहखाने के अंदर दर्शन कर पा रहे हैं। कारपेट बिछाया गया है और रेड कलर का कारपेट है, और कारपेट से थोड़ा सा आगे तहखाने में वहाँ पर मूर्ति है जहाँ पर पूजन अर्चन हो रहा है। तो श्रद्धालु इस उस क्षण को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे 31 साल बाद उन्हें ये दृश्य देखने को मिल रहा है। 1993 के बाद वो बंद कर दिया गया था, सील बंद हो गया था, वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई थी, वहाँ तहखाने का नज़ारा कोई देख नहीं पा रहा था, कोई दृश्य दिव्य जो दृश्य है उसे कोई देख नहीं पा रहा था। लेकिन अब जब बैरिकेटिंग हटा दी गई है तो जाहिर तौर पर जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए अलावा आज कहा यह जा रहा है कि जो पुजारी है उनकी भी नियुक्ति यहाँ पर होने वाली है। क्या कोई नाम अभी तक इसको लेकर सामने आया है, किसी पुजारी का नाम जो अब वहां पर पूजन अर्चन शुरू करेंगे? अब तक तो विश्वनाथ मंदिर के ही पुजारी वहां पूजन अर्चन कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक हैं वही वहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे थे तहखाने के अंदर। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आज देर रात तक जो ट्रस्ट है, काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट है, वो किसी अर्चक का नियुक्ति कर सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 5 अर्चक का नियुक्ति हो, 5 पुजारी की नियुक्ति हो, जो लगातार वहाँ पर हर प्रहरी में लगातार पूजन अर्चन वहाँ पर करते रहे। ये भी हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि व्यास जी के परिवार से ही किसी की नियुक्ति होगी और जो वहाँ पर लगातार पूजन अर्चन करेंगे, क्योंकि 1993 से पहले भी सोमनाथ व्यास के परिवार के ही अर्चक थे जो लगातार वहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे थे। तो इसी तरीके से काशी विश्वनाथ ट्रस्ट जो है वो जो है सोमनाथ व्यास के ही परिवार से किसी अर्चक की नियुक्ति कर सकता है। अब देखना होगा कि देर रात तक जब अर्चक की नियुक्ति होती है, जब पुजारी की नियुक्ति होती है, तो वो कौन कौन है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 5 अर्चक की नियुक्ति हो सकती है। जी, यानी कि 5 अर्चकों की नियुक्ति यहाँ पर हो सकती है। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से तमाम अपडेट दे रहे हैं। अमित, आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि अब देखिए, अब मुस्लिम पक्ष का जो अगला कदम होगा वो क्या होने वाला है। उन्होंने कह तो दिया है कि सीजीआई को वो खुद खत लिखेंगे, लेकिन और क्या जानकारी फिलहाल मुस्लिम पक्ष की ओर से मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल जो मुस्लिम पक्ष हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, कानून पर सवाल उठा रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि अब वो सीजीआई को खत लिखेंगे, सीजीआई से जाकर मुलाकात करेंगे। लेकिन सबको ये समझने की आवश्यकता है कि जो कानून है, जो कोर्ट है, वो सीआरपीसी की धाराओं के तहत चलता है और जाहिर तौर पे उसमें अगर त्रुटि होगी तो कहीं ना कहीं कोर्ट जरूर आपसे कहेगा कि उस त्रुटि को जाकर सुधार करिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को उन्होंने तुरंत रात में ही जाके अर्जेंसी में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज नहीं करना था, उनको चैलेंज करना था हाई कोर्ट में। जो हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो डिवीजन बेंच में जाते हैं, डिवीजन बेंच से संतुष्ट नहीं है तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो आप चीफ जस्टिस के बेंच में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि भैया ये दिक्कत है और ये मुझे लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। तो जाहिर तौर पे जो हायरार्की थी उस हायरार्की को उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप हाई कोर्ट वापस जाइए। हाई कोर्ट के लिए जब उन्होंने पिटीशन तैयार की और कल जब पिटीशन उन्होंने दायर की, आज हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, तो जज साहब ने कहा कि पिटीशन में त्रुटि है, आपको पहले 17 जनवरी के आदेश को चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 17 जनवरी के आदेश का पहले आया और उसी का एक पार्ट है 31 जनवरी का आदेश। यानी आपने अब जो पिटीशन हिंदू पक्षकार के द्वारा पूजन अर्चन की याचिका की अपील की गई थी, उसमें जो इजाजत मांगी गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उसमें पहला जजमेंट 17 जनवरी को आया, जिसमें डीएम को रिसीवर बना दिया गया था उस पूरे इलाके का। उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। और Nirmala ji, thank you very much once again for giving us this exclusive, very special interview like every year after the budget. Through our News 18 network, through CNBC, CNBC Awaaz, CNN News 18, you will be able to reach every nook and corner of the country, and investors are glued into moneycontrol.com, tracking every twist and turn of the budget. Thank you so much. My first question, a somewhat obvious question, no SOPs, no populist measures. Even in 2019 interim budget, the government had announced some SOPs, like tax rebates. There were some announcements for the farmers, but none this time. Seems like a very confident Prime Minister going into 2024 elections. You've never looked more relaxed to me before. What was going on in your mind while drafting this? Well, thank you for having me
after the budget, like every year. It's a great opportunity to talk to your viewers and also for others who are watching this program more with the keenness to know about the Indian economy. Yes, the budget yesterday did not have any SOPs announced. We treated it like a true vote on account, an interim budget before an election, and also an interim budget which is being presented with the clear understanding that the several programs which were launched with empowerment of citizens in mind over the last 10 years are reaching the ground, and the beneficiaries are already on their own speaking about it. The power of word of mouth is very strong. So when a beneficiary gets truly the benefit and without any middleman playing a role in it, they really understand that the intent of the government is what they've said is what is getting executed. So I place a lot of trust in the word of mouth, which has helped in schemes like Ujjwala, PM Awas Yojana, PM Mudra Yojana, Swanidhi Yojana, all of which have benefited the small households, small people who want to do their business and who don't have money to give for collateral, no properties to give. So this government has actually, because of the vision with which Prime Minister is committed to serve this country, is actually serving the common people in letter and spirit. And that is recognized by the people themselves. It's not as if you are saying and you're showing target numbers, you're showing achievement numbers. No, the people in the ground are saying about it. I've got it. And so is my neighbor, so is the neighbor of that household and so on. So, and that is why I have used an expression, and I mean it when I've said it, that this is secularism in action. This is where we have not shown any difference between members belonging to this community or that community, this religion or that religion, or somebody's relative and not relative. No difference. The project reaches the ground for everybody who deserves to get it. And if they are eligible, they get it, irrespective of who they are. And therefore, in every way, the principle of empowerment, the Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas, has been executed in every way. And that is the sense of confidence that the blessings of the people are not just at the time when we gave promises, but the blessings are even now coming in abundantly to say, yes, you've kept up your word. It is what the Prime Minister has also been talking about, the four castes, as he calls it. That's right. You know, the poor, women, farmers, youth. So I think that is the cornerstone of this part, of this speech. Nirmala ji, you've steered the economy in difficult times. You know, if I look at your last 5 years, there's been the pandemic. Right now, 2 wars are going on. Even then, we are projected to grow at 7.3%. Now, if I were to look at the nominal GDP, which has grown only 10.5%, consider an inflation of 4.5%, do you think that 7% itself would be challenging? I mean, do you think it is realistic for us to grow on those lines? The Chief Economic Advisor has also commented in his preface. He's elaborated on how 7% is not difficult to achieve. Globally also, the various organizations which look at economies of all countries, like IMF for instance, has also enhanced their own assessment. So, upgrading our growth estimates is not just singularly our business. People are seeing that fundamentally a lot of activities are happening. The robustness of the economy has not slackened anywhere. It has maintained its, the buoyancy with which things are happening, not just revenue collection when I'm talking of buoyancy. So there is reason to believe, yes, it is possible. And the deflator, not just the inflation, but the deflator itself
is constantly, meaning we are looking at controlling inflation, the other factors fall in place, so the deflator itself then plays a role, and therefore we are confident that on the one hand we'll be able to manage inflation, and on the other to keep the robustness in growth so that it is sustained growth. We have made every effort to look at both growth driving elements and inclusivity driving elements so that nobody is left out from this growth process, both to contribute and to gain from. Indeed. Something that has been commented enough, and you've got a lot of accolades for it in this budget. If you look at the fiscal glide path, I think you've beaten estimates. This year you've projected 5.1 next year, so that also looks promising. What is your message to the sovereign rating agencies? You're expecting an upgrade? Well, I would think that they do their job, but periodically it's our business also to bring it to their notice that economy, particularly emerging market economy like India, despite the odds, we are doing a lot of reforms, systemic reforms, which actually you're seeing is bearing the results now. If only Prime Minister Modi hadn't pressed the pedal, let's say the revving pedal, the accelerator during COVID, even as we are managing COVID, we will have to attend to reforms and continue doing the reforms. The Atmanirbhar Bharat announcements were all infused with so much of reform measures. Otherwise, we wouldn't have eliminated more than 68,000 rules, which were just so archaic and were becoming instruments for rent-seeking people. So, systemic reforms have continued. Whether it was pre-COVID, GST and IBC, together with very many other reforms like professionalizing public sector banks and so on, the emphasis on reform has given us adequate rewards, and we'll continue doing that. That is why even in the budget, we have emphasized on transparency. We have emphasized on getting everything on board the budget process itself, rather than keeping it outside of the budget or underneath the carpet. These are not small steps, and that has been consistently done in the last 4-5 years. And before that, as I said, IBC or banking reforms, the 5 major recognition R's, as we say, of the problem. So to list it, there are so many, some small, some very big. The small ones having very big implication in making the economy much more cleaner and open and transparent. The bigger ones which are bearing results in terms of the money that you collect in GST. These are not small steps. So that is the one which I would play as important indicators which rating agencies should look at comprehensively, rather than look at just one detail here, one detail there. Macroeconomic stability is also very well kept up. No, glad you mentioned reforms. I think big message coming from you that the government will continue on the road for reforms. What are the, I've said this to you before, that, cutting the rich tax last year, in an election year, before that, cutting the corporate rate tax. I mean, you've taken some bold measures. What are the next level of reforms that we can expect from you? Broadly, I mean, directionally. No, first of all, as I said, the system to become more transparent, more things will have to be done in order to make sure that we work together with states. It's one thing for the union government to work on those areas which are exclusively with the central government. But where there are overlaps, there are some states which have come about enthusiastically to say, yes, we should benefit also from this vibrancy which results after such measures are taken. And therefore, when reforms are talked about, we normally always say 3 levels where it has to be carried out with the same vigor. The central government, the state government, and then the local bodies. Now, working with the state governments has already started happening. The last few years, you see very many areas where we are working together. The local body level, the municipal, urban local bodies, the panchayats,
we need to have greater interchange of ideas and working together with them also. That will also continue now. Okay. Finance Minister, if I were to ask you this one question, with the exception of Air India, no strategic privatization has taken place, any significant. Whether it is IDBI, Concor, SCI, banks. Why has your government sort of repeatedly kind of underperformed on this disinvestment aspect? I mean, is the thinking changing within the government? Are you looking at sort of strategic sales and not maybe offer to sell completely? Is there some shift in the thinking? I would want you to, first of all, put that question into the frame that I have laid in the matter of public sector enterprises policy. Right. If a policy framework has been announced, and in that we have said that there are only core strategic sectors which government recognizes, where the government will be having a minimal presence. Right. And even in those sectors, private sector will be allowed to, or it will be completely open for them to participate in total. In the sense, there will not be any one sector, inclusive of the core strategic sector, which will be exclusively reserved for public sector, whereby consolidation will have to happen to make them big enough for a big country like India. Yes. Efficiencies will have to be brought in. Their values will have to be increased. So this question of yours will have to fit into that frame. I will not reverse any of the cabinet approved decisions. Okay. But at the same time, you should probably also have noticed that for each of them, we are working to make sure that we are not allowing them to remain there till they are getting disinvested. Equally, we are working to make sure that their valuations are kept up, they are improved upon. That if you look at the public sector listed companies and their valuation in the market today, you see the kind of vibrancy which has been brought into them. Their share values have gone up. The dividends are even much better than earlier. Absolutely. So, disinvestment is one thing, but in bring in value to them and make sure that the markets look at them absolutely favorably. No, in fact, the public sector companies have done really well, and public markets are also where they are. Would you consider sort of diluting your stake maybe to 49% in some of the companies? Thereby, they are not government owned, but at the same time, you have best of both the worlds. And the valuations could go up even further. No, certainly. That is not something which has been denied earlier, meaning as a matter of policy. But in many ways, we are already, you will see periodically, the DIPAM department which takes care of the disinvestment has slowly in trickles released a lot of government's shares into the market so that private ownerships can come in and they can take hold of those shares. So that is happening already, and we'll certainly like to make sure that greater participation, public ownership of in companies like, let's say, SBI or ONGC, this could be another possibility. Absolutely. Thank you. One of the big ideas this budget, which struck to everyone as a big idea, has been the announcement of a corpus of 1 lakh crore, to provide interest-free or low-interest sort of loans for research and innovation. Can you elaborate a little bit on this? How will this work? Will there be a separate sort of entity managing this? How will it go forward? Yes, certainly. I first of all would bring in a bit of a context to this. It's not as if we are doing it now for the first time. Earlier too, there were several funds within different departments like the science and technology. They had a CSIR, its own. Funds were all over the place. You had them doing supportive activities for innovation, each from their own side. 2 years ago, I remember announcing the National Research Foundation, which brought together all these, thinly spread resources to one pool, and from there, each of the department would claim whatever they would want to fund in terms of innovation supportive activities. But what we've now done is, they may remain so, but the government would now bring in a kind of a institution or a vehicle which can take this 1 lakh crore, which will be given to them next few years in total,
as an interest-free corpus amount. Using that, they can then identify innovation-related exercises which are happening in private sector and fund them. I may give this interest-free 50-year loan to the corpus, but the managers of that fund will then decide to whom at what cost should they give it. The cost may vary depending on the risk factors and the judgment of the professionals who will manage it. But it's certainly a fund from where private innovation will be supported. Got it. I'm sure you'll be asked this question in future, but the allocation for capex at 11.1 lakh crore, does it seem like a lofty goal considering that you could not even do 10 lakh crore in this year? No, but not really. I mean, we've done only 2 lakh, 3 lakh. That's not the case. Yeah. We're closer to 10. It's also because absorption has its own limits, whether it's the states or the departments within Government of India. When the capital expenditure is undertaken through the outlays given to them, it is only that much within 12 months that they can do and not beyond. So sometimes reaching the target, however ambitious it is to the last mile difficult within 12 months. Had we given them a few more months, they will probably even complete that. But the condition for these capital expenditure, which I have announced since last 3 years, is that that amount should be utilized within the year. So many of the state governments which take the money, which are very good in implementing, in fact, I find states very enthusiastic in wanting to avail of this facility. The difficulty comes that if you restrict them to using it within 12 months, and which is what we aim at, we want them to use it within 12 months. So I'm not saying restrict in that sense, but within 12 months when you are expected to spend that money, there are times when completely utilizing it becomes difficult. They partly use it. That is why 10 lakhs you might reach 9.2 and not touch 10, but achieving 9.2 within a matter of 12 is, I think, good enough. So to increase it to 11, I'm very hopeful it will definitely get used. And the amounts which are being given to the states are also having high utilization. Nirmalaji, if I'm right, we get a sense that there is an indication of tapering of government spending. I know we've discussed this in our last interview as well. You expect private sector also now to do some heavy lifting. So we are seeing some of the sectors looking up now. There are investments in steel, aviation, power, machinery. But are you happy with the level of private sector participation? You said that they are like Hanuman, and Hanuman has no idea of his own power. When do you think that this Hanuman will lift the economy mountain? Well, I think, as you said, they are coming out. There is investment happening. The PLI scheme is also helping them. Yes. So investments in newer areas do have a slightly longer gestation period. It's not as if their brownfield projects are getting additional money. That also is happening. But the interest in the sunrise sector is really obvious now. People are taking a lot of interest, and you're seeing them coming forward. Okay. So that's heartening news. One more question on the stress that is being seen in the rural economy. Your higher allocation outlay to Manrega also is an indication, betrays, the stress on rural economy. If you look at the results of FMCG companies, consumer durable companies, even if you look at the Nielsen data, it shows that the rural volume growth has underperformed urban volume growth for almost 7 quarters now in a row. So what is your prognosis of rural demand, and how do you think we will deal with this going forward? I'm not sure I'll be able to describe how I view what is happening in the rural areas. Let us recognize that there is a lot of shift in the way employment is panning out. Let us recognize that migration is now looking at redefining itself in a way. Many people who went back to their villages with some skills acquired are wondering if they can continue being there and utilizing and benefiting from the skills that they've acquired. Industries too today
are allowing a lot of work from home, and many who are avoiding traveling are also staying back. So that shift will have to be recognized. But equally, that's not to say people are staying back home without work or staying back and working from there, with large companies being established everywhere else. So there is a transition happening undoubtedly. Yes. Second, there's also this little savings which is coming through, which we are seeing from the various fixed deposits which are growing as different from small savings. Yes. You're also seeing some middle class looking at savings through the stock markets, demat accounts, and so on. So the indicators with which we are looking at the rural economy may vary, and there are very many newer indicators which we may not want to miss out on. Yes, I agree, FMCG market will also tell us that durable consumables are not being consumed as much as before. Yes. But, well, I take that as one indicator, but equally, the kind of activities which are now happening in the rural areas, because of better connectivity, because of other digitization, are also yet to be measured, I would think. One thing related to, the job market, especially, if you look at the campus recruitment in engineering colleges and MBA colleges. So on one side, there is this, the economy is doing well, and all indicators point to that. But on the other hand, the campus recruitment this year has been muted. Salaries have been lower. Many students have not got a job offer yet. How do you see this, in relation to the overall big picture? See, the question about employment, I am afraid we are repeatedly focusing only on those indicators pertaining to the formal economy, which is important. I am not denying its role. So college recruitments, IIM like campuses are important. But equally, the jobs that are getting created in the middle and lower order are not getting counted at all. I would look at the way in which banks and their credit offtake is happening in small and medium businesses. The new companies which have got registered, which is a data which I have put out from the MCA, the number of new companies which have started are certainly not people who are being recruited for jobs. They are people who are investing money, believing in their skills, registering a company, and probably giving jobs for others. Why would new companies get registered in a bigger number than before if employment is not being offered? The companies cannot operate in vacuum without human beings in them. So I think a fairer, open, and an exhaustive picture of India's employment, both in the formal and non-formal areas, will have to have some kind of a wider base with which, and we need to bring in such data so that the discussion can be more informed. And I think the global slowdown is also having an impact on our jobs, especially at the higher end, right? I mean, in IIM campuses or engineering colleges, etc. Equally, because of the way in which artificial intelligence is coming, the kind of job requirements that are expected of new recruits are also changing. So the people with old skill sets are now expected to have additional newer skill sets for entering into a certain area which till now did not exist. So we are lots of calibrations are required in understanding this. That's right. Yesterday in your budget speech, you were very appreciative of, income tax payers. In fact, the number of income tax, people paying income tax has gone up. Collections are up 2.4 times. You were quite appreciative. In fact, I thought you just stopped short of sort of giving them something back because, it was a vote on account. My question is that, salaried people are paying 30% today, whereas corporates pay 22% tax. In the longer term, directionally... Corporates meaning as an entity, yes, a company. As an entity, that's right. So I'm saying in the longer term, directionally, do you think you would align this in some way or the other? I'm talking about the longer term.
Well, the direct taxation reforms are a steady job in the pipeline, and some results come out and more work is happening. So, direct taxation is something on which one, ease of the taxpayers' facilitation, which has to be improved, and also one of the things happened yesterday, one of the serving the customer better business in the taxation regime happened yesterday, but more work can always be done. Yes, so Salaried can be more hopeful in the coming days in your July budget. I'm not saying anything now. No, I know that. I mean directionally over the long term. You managed inflation very well in the past few years. What about food inflation? That's really pinching the common man. Pulses are up 20%, vegetables 27%. Any plan to sort of rein in food inflation? See, food inflation cannot be spoken as one basket. Yes. Or one item. It has so many different components. If pulses are becoming more expensive, we are import dependent to meet adequacy in meeting their demand. In the sense, we are not self-sufficient. We need to import to meet our demand, and when you depend on imports, the prices are determined by the supplier, not by us. So when it is pulse or dal, where the prices have to be controlled, so much has to be done well in advance. If you know your crop is only X and not what you need, then you pre-plan imports. You have to touch on very many countries to get the imports and so on. And in that, of course, the role of the traders is very important. Yes. That is one thing. Second is you're looking at other seasonal vegetables, which can equally be affected by drought or by excess rain. That's true. No import substitution or no import in the last minute can help us. If suddenly one particular crop, say of potatoes or onions or tomatoes, are lost, the last minute procurement from somewhere else is also fraught with difficulties. That's good. So, the treatment for controlling price for pulses and the perishable crops and let's say rice which can be stored are all very different. And that is why there is a committee in Government of India which looks into this and makes sure that periodically you are able to get in time those based on estimates. It's an ongoing job. It's not with a deadline. It has to keep happening. Yes. And I think largely the committee has been successful. Otherwise, we couldn't have been closer to the policy range. That's right. I had interviewed the Prime Minister in 2016, as early as that, and he spoke about the white paper. He said that we should come out with the white paper because we inherited an economy which was in the fragile five. And and that was early, just 2 years into the government. And what we had to really do to drag it out of, the levels it had reached. You spoke similarly yesterday about a white paper, and you said it was a Herculean task to bring the economy back from the brink. What is the idea behind the white paper? Why now? And will it be another stick to beat the opposition with? See, you're right in pointing out that the Honorable Prime Minister has spoken about it even in 2016 in your interview. Then it was so many different sections of our society themselves suggested to us that you better bring a paper out, white paper out, to say why Indian economy has reached the fragile five, to say why our banks had become such a black hole. Nothing could be restored of the banks. Banks were all in deep trouble. Look at the number of NPAs and the value of the NPAs, meaning what was the original value and to what extent they had reached almost close to valueless positions. So whether it was your banks, whether it was the overall economy, whether it was defense procurement, whether it was a vital sector of telecom, why? Even minerals. Yes. Every area was ridden with problems. Now, if you're talking of corruption, well, it's one thing, it goes to the court, people get punished, and then the monies are given back or not given back, values are retrieved or not retrieved. That's one side of the story. But what impact it left on the economy? To restore your banks back to health, to make sure your country is safe with adequate strategic equipments given to defense personnel,
to make sure that your mines, which are wealth under the earth, meaning inside the earth, under the soil, to use them for the benefit of the country rather than to use them as one instrument through which you line your own pocket. What implications it had on the economy? Banks not being healthy, mines being given to brothers and sisters who did not want to extract the mineral for the benefit of the country. Spectrum allocations, if it had happened in time, I didn't have to spend so much to restore BSNL to have 2G or 4G in time. And what implication does it have on the country when 4G is not available in time, whereas the whole world is talking about 5G? Yes. So the kind of impact that it had, the mismanagement, it is not just talking about, policy paralysis for a fragile 5. It's talking about every one of these steps, which one in morally, which number one, morally was immoral, in the sense was not right, and equally the kind of positive effect, if it had happened very well in a transparent fashion, it would have had on the economy. We lost 10 glorious years, and to restore it to that position back and then to pull it up to now get closer to the world's third largest economy is a Herculean task, which I'm grateful this country had a Prime Minister like Modi ji, who single-mindedly said, I will restore this economy back, it's my service to the nation. Yes. Otherwise it wouldn't have happened. So why the white paper now? Yes. We've had 10 years, and prior to that there was a 10 years where you saw all this happening. Policy paralysis, corruption, nation losing its endowments, and so on. 10 years under Prime Minister Modi. What kind of course corrections had to happen? Yes. What kind of restoring confidence had to happen? What kind of pulling back from rut that had to happen? And equally making sure you're purchasing the equipments, you're removing BSNL from distress, you're making sure BSNL employees are given their due, you're making sure the country gets 5G, not just 4G. Look at the coverage India has in 5G today. I agree. All this, and to make sure that the investor confidence is not just intact, but is growing, that within a matter of 8 years, I would say, we've reached $596 billion US as our foreign exchange reserve. Just compare that with the last 10 years. At least for the sake of the elected honorable representatives who are sitting in the parliament, they should know what was it then, what effort it took to restore it here, and what we should not therefore ever imagine or dream of doing in personal interest, forgetting the nation. Why now? Parliament should know. 2, at that time, had Prime Minister Modi not taken the call that in the interest of our nation, I would not bring it out. He didn't bring the paper then, white paper then, because you put the nation first. You say, if I do it now, I can be happy, but the confidence in our country would have been lost. Investors wouldn't have come. Our own people would have lost faith in the systems. They would say, oh my God, this government will come, eat away and go. That next government can come. It'll do its own, but we're all languishing. The faith in institutions, in government, in leaders, in politics would have been lost in the minds of people. And I'm so grateful that the Prime Minister didn't do it then. He restored it all, put India on such a wonderful track towards becoming third largest economy, and then so that all of us know what it took and what we shouldn't do in the future, this paper. So when do you table it? Well, sooner, I suppose. A passionate reply from you, I must say. Nirmala ji, when it comes to the markets, Nirmala Sitharaman can do no wrong. Last 2-3 years, markets have been on a roll. My question is, can you assure the markets and its participants that there will be stability in the capital gains tax regime? And I ask this question because last year you had tweaked, the debt market, the debt mutual funds in your budget speech. So
is there stability around the corner in the foreseeable future? Policy stability is one thing which Prime Minister really lays a lot of emphasis on. Yes. He doesn't like periodic tweaking. He would tell you it's only 2 years, it's only 3 years, let it play out, let it settle down and so on. So he is never in favor of quick twists and turns. Right. And this is not me saying, people who have observed him for his tenure as Chief Minister will know that the biggest strength under Prime Minister Modi is stability in policy. So that's a singular line reply that I can give for it. Right. No surprises. I mean, long-term stability in policy. Another question, current question. RBI has imposed restrictions on the operations of Paytm Payments Bank. I don't, want to go into the details, but just a question is, what is your message to the fintech industry? Is there more than meets the eye in this case, or are we going to be cautious when it comes to the fintech sector? No, I wouldn't want to comment on any one particular company, but fintech is an area in which all of us are very enthusiastic. India has contributed a lot in this sector. India's contribution in this sector has been globally recognized. Today, if people are looking at solutions, fintech solutions, they are looking to India. Our youth have contributed a lot and built capacities for themselves. This is an area which we'll certainly like to work with and encourage. I'm not commenting on any one company. That's heartening to know for the fintech industry. Thanks for the message. You have been tightening things around. Would you think that the RBI should loosen now? Well, RBI does take its own call, but I will appreciate the RBI for working together with the stakeholders. And they take a call, I'm sure they take a call that keeping growth in mind. They've been steady, I suppose. They'll continue to be steady is my expectation and hope. Few quick political questions. I'm aware of the time. Thank you for answering all our business and economic questions at great length. We are seeing a different side of Nirmala Sitharaman. In the last few weeks, you've also been seen as an aggressive politician. You have turned the heat on your rivals in Tamil Nadu. You said that Stalin's DMK is an anti-Hindu party and that they were forbidding the live telecast of the Ram Mandir Pran Pratishthan ceremony. What do you have to say to that? 100%. I have not said a loose word. I did mean what I say, and I do truly believe that repeatedly they attack on Hindus in Tamil Nadu in layers which are seen and in layers which are not seen have been felt for a long time. I speak very many times about Tamil Nadu with lived experience. Yes. And therefore I don't talk too soon, nor do I speak too indiscreetly. So when I say something, I mean it because I feel it also. I do corroborate with data, with actual ground activities, and then only comment. Unfortunately, if that is the politics of a state party, which has had a lot of ideological support extended to separatist politicians of years gone by. Yes. Whether they support it even today, I do not know, but there are periodic voices which come out which are very separatist in tone and tenor. My grief is a national party like the Congress party has been decimated in Tamil Nadu, and till today, they are not a position to win an election, even a couple of seats on their own, without being in alliance with one of these parties. BJP is, of course, a beginner there. It's been there since the Jan Sangh days, and it's gaining strength. We'll continue to work with the people. But the grief that I want to express is a national party like Congress party also joins that anti-Hindu voice, does not condemn the anti-Hindu voice of the party DMK, and even worse, goes in support of such voices which come from DMK, and today, not just in Tamil Nadu,
a Congress party member in the Lok Sabha today, meaning he's a sitting Lok Sabha member, and a brother of a deputy chief minister in Karnataka, also speaks in separatist voice. So anti-Hindu is one, anti-Hindu activity is another, which also is happening in Karnataka incidentally. Congress party in Tamil Nadu supports these kind of anti-Hindu or anti-separatist voices. And today that is a spirit with which Congress also is aligning, which is what I find utterly shocking. Is there an attempt to paint the Bharatiya Janata Party as a North Indian party? And you know, this North-South divide, encouraging that. Is that what you're saying? They've always called Bharatiya Janata Party two things. It is a Brahmin Baniya party. Yes. It's a Hindi party. Today, the kind of support BJP receives in South India disproves all this. And I don't want to name individuals and say, oh, he or she belongs to this caste, we've promoted this caste, and therefore, more than BJP, I can challenge today, is there any one party in India which has worked for the betterment of tribals in India, which has worked for the betterment of the Dalit scheduled castes in India, which has recalled some of the best iconic leaders coming from those communities but attaining national stature, whether it is Dr. B.R. Ambedkar, whether it is Guruji and considered like God himself, Birsa Munda, whether it is the sons of the Shahzade, Sikh gurus, who gave their lives in their teenage for the sake of our country. So in any one of these, I want to ask, is there any one party in this country which has as much served as the BJP? So what is Hindi party? When Prime Minister of India is talking about all languages, he quotes Thiruvalluvar. Yes. He quotes from Purananuru. Every given opportunity, he takes the languages even to the UN. So, Tamil Nadu's politics, speaking of these kind of things, has happily kept the Hindi-speaking parts of the country, even if they are in alliance with them, away from the separatist rhetoric. So you think, oh, we are in alliance with that party, they cannot do any wrong. Yes. But they've been speaking all these separatists earlier. They're speaking anti-Hindu earlier. Only because of the language gap. Just as they didn't want to learn Hindi, many of the North Indians didn't want to learn Tamil. So there's never been an understanding, a comprehensive, complete understanding of what's developed in Tamil Nadu. So are you hopeful that the BJP will do better this time in South India? I mean, how many seats do you see them getting out of 131 seats? It's difficult to talk about number of seats, but I'm sure the efforts which are being made by Tamil Nadu BJP unit. So you're likely to open your account in these states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh? We'll certainly work for the people and hope to have their Kerala. blessings. Of course. Tamil Nadu, you have whether it's Kerala, whether it's Tamil Nadu, lots of work is happening and people are responding as well. Are you likely to contest the elections? I don't think. No. It's my party's decision. Okay. One last question on 2024. What is your assessment? How many seats do you think that the BJP is likely I'm not sure I'll again speculate on the number of seats. Better than last time? Much better than last time? I think people will see the truth and commitment and dedication with which the Honorable Prime Minister has been working. They are blessing him. They are seeing his earnestness. They are seeing how non-stop he puts the people of India and the nation first among everything else. So I'm confident. The opposition has constantly been crying themselves hoarse about the use of intelligence agencies. So whether it is Kejriwal or Mamata Banerjee's leaders in West Bengal or Hemant Soren more recently, they complain that there is harassment by central investigative agencies. And if
the leaders jump onto the other side and join the BJP, then they are let go scot-free. What do you have to say? My last question. No, first of all, many of the cases in which the CBI or the Enforcement Directorate or the income tax pursue cases cannot come to the level of asking for custodial or asking for interrogation or arrest can happen overnight. You will be surprised in many of these cases. The cases were originally filed during UPA times. Many of these cases belong to that era. You know the Indian system, the level and the time consumed for each stage to mature. And to reach a stage where summons are being served, it consumes a lot of time. Many of these are from that era case. So it's not as if we've done it. One. Second, a survey or a search happens. Tell me if they've come empty-handed. Roomfuls of cash. Equally, when we are talking about common man adopting to technology, doing digital payment, you have people sitting with tons of currency notes in their homes. Nowadays, everything is videographed. I can't sit here and say, I found so much cash in your house without a proof. The video shows in the bathroom, in the bedroom, in lockers, tons of cash being kept. What explains that? So, it's very well to use that as a whip to hit at the ruling party to say you're using the Enforcement Directorate or CBI. These are professional agencies. They take huge time to make their cases compact and ready because everything is now monitored by the court once the charge sheet is filed. Yes. And you have to submit the documents to the court. You can't just go there and say, I found this, I found that. Records prove it. So, era is changing. People don't like to have corrupt leaders. So when the Enforcement Directorate go and knock at the doors and come out with such pictures, common people are seeing it. You may cry hoarse, as you said, saying it is being politically used. I'm sorry. It is something which was case from your era. You filed a case against your own ally. There are partners in crime. And then there are partners and enemies also. Yes. Nirmalaji, thank you so much for answering all our questions. You answer economic questions and political questions with equal felicity and passion. It's always such a pleasure to speak to you. Thank you so much. Thank you very much, Rahul. तो न्यूज 18 इंडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। कहा यह वास्तव में एक अंतरिम बजट था, लोगों को ताकत प्रदान करना उनका मकसद था इस बजट के जरिए। और साथ ही उन्होंने कहा उज्ज्वला पीएम आवास योजना को भी बढ़ावा देंगे। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर बात करती हुई वो नजर आई। ये वास्तव में एक अंतरिम बजट था, ये उन्होंने कहा। और निर्मला सीतारमण आगे ये भी कहती है कि लोगों को ताकत प्रदान करना इस बजट का मकसद था। उज्ज्वला पीएम आवास योजना को भी इसके जरिए बढ़ावा दिया गया। ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया और पहले और आज के हालात में बड़ा अंतर है, ये भी उन्होंने कहा। साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि पीएम ने हमेशा देश हित में ही फैसले लिए हैं। और साथ साथ यूपीए के समय हमने 10 साल गवा दिए, ये भी उन्होंने कहा। यूपीए सरकार पर भी वो निशाना साधती हुई यहां पर नजर आई। तो देखिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। बजट पर वो बोल रही थी, ये अंतरिम बजट था इस बार साल 2024 का। और ऐसे में अब जब 2024 चुनाव भी होने वाले हैं, उससे ठीक पहले अंतरिम बजट पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बातों का जिक्र किया और साथ साथ कई पार्टियों पर निशाना साधती हुई भी नजर आई। हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, ये भी उन्होंने कहा। कांग्रेस अपने दम पर 2 सीट भी नहीं जीत सकी, ये वो कह रही हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। बजट पर वो अपनी जो राय थी वो रख रही थी। डीएमके लगातार गलत बयान दे रही है, ये उन्होंने कहा। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और कहा कि पीएम ने देश को सही दिशा में बढ़ाया है।
और ये भी कहा कि कांग्रेस अपने दम पर 2 सीट भी नहीं जीत सकती है। देखिए 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव को लेकर भी तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और तमाम पार्टियों को लेकर निशाना साधती हुई भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां नजर आई। और भारत मंडपम की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त ग्लोबल एक्सपो चल रहा है और ऐसे में वहां पर जितनी भी प्रदर्शनियां लगी हुई हैं उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकसद एक ही है कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े और इसके लिए बीजेपी सरकार लगातार प्रयासरत रहती है। इस तरीके के एक्सपो बार बार कराए जाते हैं और भारत मंडपम की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर समझते हुए किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाएगा। ये एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं प्रदर्शनी में इस वक्त वो वहां मौजूद हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास उनकी ओर से यहां पर किया जा रहा है। और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य रहता है, बीजेपी की सरकार का जो लक्ष्य रहता है, तकनीक के क्षेत्र में किस तरीके से युवाओं को भी आगे बढ़ाया जाए और कई सारे मौके उससे निकाले जाएं, कई सारी नौकरियां उसके जरिए निकाले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तकनीक का इस्तेमाल हो, उन चीजों को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर नजर आते हैं। और ऐसे में ये तस्वीर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की, जहां भारत मंडपम में पूरा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन उनकी ओर से किया जा रहा है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्सपो में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, उसी की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। इस वक्त कई सारी प्रदर्शनियां वहां पर लगी हुई हैं और हर एक प्रदर्शनी में जाकर वो उसका अवलोकन करते हैं, उसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखेगा। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का भी वक्त मांगा है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के फैसले पर ऐतराज जताया और इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, AIMPLB की तरफ से राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया है। व्यास जी तहखाने में पूजा पर AIMPLB को बहुत ज्यादा ऐतराज है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का पूजा पर तत्काल रोक लगाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया गया है। ज्ञानवापी मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी जाएगी, जो जानकारी दी गई है। और ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी और तब तक का इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन पूजा जैसी चल रही थी उसी तरीके से चलती रहेगी। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि एक नए पुजारी को नियुक्त करने की भी वहां पर बात चल रही है। फिलहाल वहां पर विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो 5 वक्त की आरती वहां पर कर रहे हैं और ऐसे में तस्वीर भी आप देखिए, जिस दिन से पहली पूजा हुई है उस दिन से तमाम जो भक्त हैं वो देखना चाहते हैं कि आखिर वो स्थान कौन सा था, कौन सा वो तहखाना था जिसकी बात लगातार की जा रही थी। और कहा जाता था कि 30 साल पहले यहाँ पर पूजा होती थी, लेकिन अब यही वही व्यास जी तहखाना है जहां पर 30 साल पहले पूजा होती थी, लेकिन यहाँ फिर से पूजन अर्चन अब शुरू हो गया है। तमाम जो भक्तगण हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। एक झांकी उनके लिए छोटा सा झरोखा खोल दिया गया है जिसके जरिए वो अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने को लोगों के लिए खोल दिया गया है। तहखाने में विराजमान शिव जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु ज्ञानवापी पहुंच रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए
व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। और इस केस की अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया कि देखिए पूजा जारी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच में मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अभी हम पूजा पर रोक नहीं लगा रखे हैं। पूरे मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हालांकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले ही मुस्लिम पक्ष कह चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए आज नए पुजारी की नियुक्ति हो सकती है। हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने नए पुजारी की नियुक्ति का दावा किया है। फिलहाल विश्वनाथ मंदिर के पुजारी व्यास जी तहखाने में इस वक्त पूजा कर रहे हैं। ये पूजा से जुड़ी आप तस्वीरें भी देखिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक नए पुजारी वहां पर नियुक्त किए जा सकते हैं। कौन होंगे अभी तक ये तय फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन आज ही कहा यह जा रहा है कि नए पुजारी की नियुक्ति वहां पर कर दी जाएगी। लेकिन तमाम जो भक्त हैं वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं, उसकी भी ये तस्वीर आप देखिए। अब वहां पर एक छोटा सा झरोखा खोल दिया गया है, जिसके जरिए जो लोग हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा स्थान था ज्ञानवापी परिसर के भीतर ही, जहां पर 30 साल पहले पूजा होती थी। व्यास जी तहखाने के रूप में उसको जाना जाता था। वही हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा की जानकारी दी। साथ ही नए पुजारी की नियुक्ति का दावा भी उन्होंने किया। सुनिए क्या कुछ कहा। आज प्रातः ब्राह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई, तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। और ख़ासतौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदूजन हर्षित हैं। अभी तक जो है विश्वनाथ मंदिर के जो अर्चक थे वही पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन आज पूर्ण संभावना है कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अनुसार एक नए पुजारी जो है आज मिल जाएंगे हम हिंदू समाज को जो है। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है कि हम लोग को मतलब व्यास जी के तहखाने में दर्शन का मतलब अधिकार मिला है। आज पूजा का दूसरा दिन, तो कैसा आप लोगों को क्या लग रहा है कि कितनी खुशी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए वहाँ पे? हम लोग को तो बहुत खुशी है, पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजा अर्चना हो रही है और ज्ञानवापी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी है। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाना का ताला खोल दिया गया और रात में ही वहां पर साफ सफाई हो गई और साफ सफाई होने के बाद रात में ही पूजन अर्चन भी किया गया। 30 साल बाद ये पहला मौका था जब वहां पर ज्योत जलाई गई है और 30 साल बाद वहां पहली बार पूजा हुई और अब हर कोई वहां पर देखना चाहता है, उस स्थान के दर्शन करना चाहता है। हर दिन यहां पर 5 बार आरती हो रही है। 5 बार आरती होने के बाद लोग वहां पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। हर कोई खुद भी आरती करना चाहता है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन ये झरोखा आप देखिए, जिसके जरिए अंदर झांक कर कोई भी भक्त यहां पर दर्शन कर सकता है, उसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन पीछे प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि परिसर एक ही है जहां पर नमाज भी अदा हो रही है और पूजा अर्चना भी की जा रही है। सामने से दर्शन हो रहा है बाहर से ही, लेकिन एकदम बहुत उत्साहित हो गया मैं। बाहर से ही व्यास जी के तहखाने में दर्शन हो लगातार हो रही है, झांकी हो रही है बाहर से और साधारण श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है बाहर से। मन एकदम उत्साहित हो गया, एकदम रोंगटे समझ लिए खड़े हो गए हमारे दर्शन करके, क्योंकि 1993 में आखिरी बार पूजन हुई थी और फिर अब शुरू हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज लगा कि हिंदुस्तान जाग रहा है। आप लोग क्या कहेंगे व्यास जी के तहखाने में दर्शन पूजन करना? बढ़िया है, मन खुशी हो गया। काफ़ी अच्छा लगा देख के। सुबह आए थे हम लोग 6 बजे आ गए थे, तो काफ़ी भीड़ कम था तो जल्दी से दर्शन भी हो गया और अच्छा लगा देख के। अभी आए हम लोग, कॉलेज से आ रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट हम लोग ना, तो आए सुबह सुबह दर्शन हो गया। तो कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत की गई। आम लोगों के लिए झरोखा खोला गया। बाहर से आए श्रद्धालु तहखाने में दर्शन करें, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अब लगातार पहुंच रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आम लोग भी तहखाने में शिव जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और सालों से इंतजार किया जा रहा था एक इस तस्वीर का
जब कब यहाँ पर जो है पूजा पाठ किया जाएगा। व्यास जी का ये तहखाना जहाँ पर 30 सालों बाद जो है पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में तहखाने में जब दर्शन शुरू हो चुके हैं तो दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो लगातार अब पहुंच रहे हैं। महादेव की पूजा यहाँ पर की जा रही है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु जो है वो अब फिलहाल तहखाने में दर्शन कर पा रहे हैं और दर्शन के लिए सुबह से भारी श्रद्धालु की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है, जिसकी तस्वीरें लगातार मेरे रिपोर्टर्स आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको व्यास जी के तहखाने की दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए एक तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अभी तो सिर्फ ये एक तहखाना है और भी तहखाने खुलने जो है वो बाकी है। लेकिन इन सब के बीच में मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि अभी हम पूजा पर रोक नहीं लगा रखी है। हालांकि अगली सुनवाई जो है वो 6 फरवरी को होगी, यानी कि नियमित तौर पर जो है 5 बार आरती जो है वो फिलहाल व्यास जी के तहखाने में महादेव की जा रही है और 6 तारीख तक इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन एक तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम इस पूरे मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखेंगे और हम चाहते हैं कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और जल्द से जल्द जो है वो इस मामले में सुनवाई हो। हम भी चाहते हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम चाहते हैं कि देखिए देश में शांति और सद्भाव जो है वो बना रहे, लेकिन उसके लिए हमारी बातें सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्ञानवापी के बाद अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान से खबर सामने आ रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल के पाठ्यक्रम में जल्द ही बदलाव के संकेत दिए हैं और इस दौरान उन्होंने मुगल शासक अकबर को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मीना बाजार चलाने वाला अकबर महान नहीं था। जैसे अकबर महान था, क्यों महान है? वो तो मीना बाजार लगाकर माँ बहन ने कोठा के लिए लाभकारी, मान कैसे हो सकता है? और फिर महाराणा प्रताप राघव युद्ध कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप तो हमेशा देश के लिए, मेवाड़ के लिए लड़े। उनसे आगे झगड़ा करने वाले तो देश का हितकारी कैसे हो सकता है? ऐसे अंश होंगे तो हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन अंशों को हम विलोपित करें। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बच्चे हैं, क्या हुआ उनके साथ? उनको उनके भविष्य में अंधकार लाने की कोशिश हो रही है। ज्यादती की है कांग्रेस ने कि महात्मा गांधी स्कूल का नाम तो दे दिया, लेकिन उसमें संसाधन नहीं दिए। खाली सारी कांग्रेस ही खाली, तो वो तो काला काला करेंगे करेंगे। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाना मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका। पूजा पर तत्काल रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इंकार। फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सड़क पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी का भी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल। दिल्ली में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजे गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार। हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। चंपाई सोरेन ने ली झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस और आरजेडी के एक मंत्रियों ने भी ली शपथ। रांची से हैदराबाद निकल रहे हैं सरकार में शामिल 39 विधायक। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। सड़कों को सुरक्षित बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सड़क पर आप सतर्क रहिए तो सब सुरक्षित रहेंगे। सड़क सुरक्षा अभियान, संवेदना का सफर। 3rd February 2024, 11 AM onwards on News 18 Network. वो अमेरिकी कांग्रेस को दे दी गई है।
I cannot give you a timeline. This was the initial step today, notifying Congress. The exact timeline of the delivery is something that we will explore with the government of India over the coming months. I will say with respect to the deal itself, the $3.99, almost $4 billion sale of 31 MQ-9B Sky Guardian aircraft will provide India with an enhanced maritime security and maritime domain awareness capability. तो आपको बता दें, अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है और किस तरह से अब भारत को 330 करोड़ लागत की ये जो डील है उसको फाइनल कर दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि ये बगदादी किलर ड्रोन है जो अब आने वाला है और इससे नेवी की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस डील के बाद एक तरह से जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनमें चीन है, जिसमें पाकिस्तान है, वहां जरूर खलबली मच जाएगी। इस बड़ी डील के बाद MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की बिक्री पर अब अमेरिका ने एक तरह से मोहर लगा दी और अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को यह खतरनाक अटैक ड्रोन देने की अंतिम मंजूरी दे दी है। तो इस बड़ी डील के बाद जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान है, वहां जरूर खलबली मच गई। और अमेरिका के MQ-9 को गेम चेंजर कहा जाता है, जो आसमान में छिपकर जमीन या फिर समुद्र में छोटे से छोटे टारगेट को भी निशाना बना सकता है। और आपको बता दें कि MQ-9 ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन में शुमार होता है। यह लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होता है, यानी पिन पॉइंट हमला करने में बेहद काबिल है। अपने साथ एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है, यानी समंदर और जमीन पर हमलों को अंजाम दे सकता है। एक चलती कार पर भी यह निशाना लगा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष को मारने का सबसे बेहतरीन अचूक हथियार है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसका बाकायदा इस्तेमाल होता है, मतलब सबमरीन पर निगरानी रख सकता है, उस पर पूरी नजर रख सकता है, उसकी सटीक लोकेशन भी बता सकता है। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, तो आप इसकी स्पीड का भी अंदाजा लगा सकते हैं। 14 हेलफायर मिसाइल से किया जा सकता है इसको लैस। तो कितना जबरदस्त ये मारक क्षमता इसमें है। और भारत को जब ये डील भारत के लिए फाइनल की है अमेरिका ने, तो कितनी बड़ी ताकत के रूप में भारत अब उभर कर आएगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डील के फाइनल होने के बाद अब भारत कितना शक्तिशाली होगा। और ऐसे में जो पड़ोसी मुल्क हैं, चीन और पाकिस्तान, वो कितने बेचैन हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। खबर वाराणसी से। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजा अर्चना हो रही है और ज्ञानवापी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जबरदस्त तरीके से उमड़ी है। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने का ताला खोल दिया गया। रात में ही साफ हो गया, साफ सफाई की गई और रात में ही पूजा की गई। 30 साल बाद वहां पहली बार पूजा हुई और अब हर दिन 5 बार आरती हो रही है। और कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत की गई है और जो आम लोग आ रहे हैं, जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए झरोखा खोला गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची हुई है। आज प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है, बहुत अच्छा लगा। उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती, आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। और आज दूसरा दिन है और इसीलिए हम उसी में हम लोग शामिल होने आए हुए थे और प्रतिदिन आते हैं, लेकिन आज आनंद आ गया। जब से आज व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चला। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है। परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है। व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत की गई है और आम लोगों के लिए, जो आम श्रद्धालु, उनके लिए झरोखा खोला गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है और दर्शनों का सिलसिला बाहर से ही सही लेकिन शुरू हो गया और बेहद खुश है तमाम श्रद्धालु जो पूरी आस्था के साथ पहुंचे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर लोग जो हैं वो पहुंच रहे पूरी आस्था और भक्ति के साथ, बेहद खुश हैं। और अब चूंकि
दर्शनों की एक तरह से इजाजत है और पूजा पाठ शुरू हो गया है, बाहर से ही सही लेकिन श्रद्धालु पहुंच रहे पूरी आस्था के साथ। और मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, चाहे बाहर से ही सही, झरोके ही सही लेकिन लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, बेहद खुश हैं। जी हाँ, बिल्कुल पंकज जी, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु लगातार काशी विश्वनाथ में आ रहे हैं, क्योंकि 1993 के बाद अब जाके जो है जो तहखाना है वहाँ पर पूजन अर्चन शुरू है। सबसे पहले एक तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ। देखिए, एक रास्ता ये है जो कि सीधे ज्ञानवापी की तरफ जा रहा है और यही जो दूसरी तरफ का जो रास्ता है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जब श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए जाते हैं तो वहीं से दर्शन पूजन व्यास जी के तहखाने में वो भी कर सकते हैं। और कई लोग यहाँ पर हैं, सीधे हम इनसे भी बातचीत करते हैं जो श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या कह रहे हैं ये श्रद्धालु। आप लोग दर्शन पूजन करने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर, अंदर गए थे आप?